Hi, good afternoon, everyone. Just a second. Okay. So first of all, happy 14th. Okay. ठीक है. So it couldn't have been more, better, worse, जिस तरीके से भी you can define, because tomorrow you have your gate exam as well. ठीक है. So the timing couldn't have been much worse or better, right? Could have waited at least एक दिन के लिए so that आप comfortably and with good frame of mind अपना गेट का पेपर दे के आ पाते. So that is separate. But of course, as we discussed ki, last week, ki today will be the day when answer key, response sheet, everything will be announced, right? So I guess all of you must have logged into your student portal और वहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही आंसर की response sheet and question paper as well, right? So this is the आंसर की मोर और लेस आप सभी के पास आंसर की होगी, राइट? कुछ क्वेरीज हैं विच वेरीज फ्रॉम, जैसे कि आंसर की में जो आंसर्स हैं दे आर रॉन्ग, ठीक है, मेनली बिकॉज दे आर नॉट मैचिंग. ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉमन इशू दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग. सो तो पहले तो टू एड्रेस दैट क्वेरी, लेट मी टेल यू, मतलब आई एम ऑल्सो सीइंग अभी का इस साल का पेपर पहली बार, राइट? सो दैट इज समथिंग विल डिस्कस लेटर. बट हाँ, टू टेल यू, यूजुअली होता क्या है, जैसे जब आप इवन कॉलेजेस में भी पेपर देते हो तो यूजुअली हैव सेट नंबर ऑफ सेट्स ए बी सी सो ऑन, राइट? तो डिफरेंट सेट्स होते हैं, हर बच्चे के पास एक अलग सेट आता है इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन डिफर करती है हर सेट में. कल को आप अपने साइड वाले से पूछोगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, सो ही और शी माइट नॉट हैव द सेम क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन वी हैव मल्टीपल सेट्स, राइट? सो दैट इज वन थिंग कि हर एक सेट में एक जो ऑर्डर होता है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का, वो डिफर करता है. देन यू हैव योर सो कॉल्ड मास्टर पेपर और द एक्चुअल मेन पेपर, जिसमें एक एक्चुअल सीक्वेंसिंग होती है, राइट? सो यूजुअली जब भी आंसर की आता है ना, और जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो यूजुअली मास्टर पेपर के हिसाब से आते हैं. ठीक है. मास्टर पेपर, मास्टर सेट, जो भी आप उसको कहना चाहो, जिस भी नाम से. सो यूजुअली जो सीक्वेंसिंग होती है ना, वो उसके हिसाब से होती है, आंसर की मास्टर के हिसाब से. नॉट ए के लिए एक अलग आंसर की नहीं होगी, सेट बी के लिए अलग नहीं होगी, सी के लिए नहीं. बिकॉज वहां पे ऑल क्वेश्चंस आर टेकन केयर. इज जस्ट द सीक्वेंशियल ऑर्डर दैट डिफर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सेट within them, but of course in context of the master paper as well. ठीक है. So वो जो issue है, that you can just carefully look at the paper, और वहां पे जो कोड है उसको देखते हुए आप मैप कर सकते हो आंसर की के साथ, सो दैट यू नो कि हाँ, आई एम चेकिंग एक्चुअल क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर. ठीक है. मैं 1 का क्वेश्चन लेके 10th का आंसर नहीं चेक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरा सिक्वेंशियल ऑर्डर गलत है. ठीक है. सो आप अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो यार, स्टूडेंट पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स, मतलब इफ यू हैव टाइम, अगर आप कल का पेपर नहीं दे रहे हो गेट का, सो यू गाइस कैन, फ्रेंड्स कैन सिट एंड जस्ट लुक एट द आंसर की एंड क्वेश्चंस एंड सॉर्ट इट आउट. अपना खुद का एक आंसर बना आंसर की बना सकते हो, देन क्रॉस चेक विथ एवरी क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है. सो दैट शुड बी सॉर्टेड. वो कोई मेजर कंसर्न नहीं है. जस्ट वांट टू हाईलाइट सो दैट आप पैनिक ना करो कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब आंसर की पूरी ही गलत है. ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? सो दैट्स अ वेरी ह्यूज ब्लंडर. वो नहीं है. इट्स जस्ट की सीक्वेंशियल ऑर्डर है, दैट डिफर्स, राइट? सो जस्ट क्रॉस चेक दैट वंस, और बाकी आप सभी डाउनलोड कर लो. एंड इफ यू हैव टाइम, ऑफ कोर्स, इफ यू नॉट गिविंग टुमारोज एग्जाम, पेपर इज आउट देयर. ठीक है. लेट ऑल ऑफ यू हु आर सिटिंग फॉर टुमारोज एग्जाम ऑफ गेट, आप वो देकर आओ. ओवर द वीकेंड विल डिस्कस द पेपर. ठीक है. एंड विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर की इन डिटेल, राइट? मोस्ट पर्टिकुलरली आपका पेपर, राइट? सो दैट इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस वंस, कि
आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर दोनों ही सही हैं, इज जस्ट द ऑर्डर दैट डिफर्स। ठीक है यार, आई गेस आ चुकी है। आप अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करोगे ना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एज प्रॉमिस्ड बाय आईआईटी दिल्ली। 14 डॉट 12 PM 11:30 12:30 के आसपास आ चुका था। सारी चीजें आपके पोर्टल पे है, जस्ट सिंपली लॉग इन एंड यू कैन एक्सेस देम। ठीक है। यार कल के एग्जाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जो आई ऑलवेज टेल फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, दैट इज योर राइट फ्रेम ऑफ माइंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो टफेस्ट क्वेश्चन भी इजी आपको करवा सकता है। ठीक है, इफ यू आर विद गुड फ्रेम ऑफ माइंड, आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गो विद अ पॉजिटिव अप्रोच, दैट इज वन थिंग। देन ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका सारा चीजें हो चुका है तो लास्ट मोमेंट के लिए कोई अननेसरी पैनिक करते हुए कोई सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट लास्ट मोमेंट चीज वो नहीं करनी है। वट एवर यू हैव डन, यू कैन डू अ काइंड ऑफ अ ब्रश अप, अ रिविजन इन अ क्विक मोड। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसका ब्रश अप कर लो। देन ऑफ कोर्स कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ भी है जो आपको लगा था कि दे वर टफ फॉर मी, तो उनको भी एक क्विक रिवीजन दे दो। राइट। एंड आई गेस इट्स लाइक कल 2:30 को पेपर है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? So it's almost just 24 hours left. So nothing too much fancy to do. It's just the revision, practice, and also request कि कट ऑफ रखो कि आज इस टाइम तक ही I'll study, not beyond that. ठीक है? So that you take a proper nap, wake up on time, सुबह एक रिवीजन करना है, कुछ चीजें देखनी है तो देख सकते हो, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका आफ्टरनून सेशन है विच स्टार्ट एट 2:30। So good amount of time is there for you to wake up early, or whenever you wake up and then do a revision. So yeah, that should be good enough, because the last moment there's not too much to do, and you should not approach something out of the box at this stage. Okay. So time paper was easy, so cutoff will be high. Yeah. So paper was easy, okay. And once we go through it, we'll further analyze it. If paper was easy, then of course the cutoffs will shoot up, no doubt about that. Till now, 2025 IIT JAM Economics paper was the easiest paper. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिव्यू। अभी ये पेपर पूरा एनालाइज होना है। सो वंस वी डू दैट, देन विल कंफर्म। मोस्ट लाइकली ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखते हुए इट सीम्स द easiest IIT JAM Eco till date out of the 5 editions, right? So you couldn't have asked better. Pattern for gate, of course, pattern for gate is आपका 25-26 questions of general aptitude, right? And then remaining from domain. That is one thing. Then, of course, gate pattern में the another part is कि you have MCQs, of course, and उसमें आपको NAT के भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं जो clearly visible होगा वहां पे, when you don't have any option. You can expect one or two MSQ as well, विच इज रेयर, बट हाँ नेट आने के प्रॉपर चांस होते हैं, एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन। सो इट्स सेम पैटर्न, बट या डिवाइडेड इनटू टू, जनरल एप्टीट्यूड एंड डोमेन। ठीक है, सो दैट इज ओवरऑल आपका पैटर्न। 63 at this stage, it might sound a bit low marks, but I feel a 60 plus is still a decent score. ठीक है, एंड मे बी इन द अपकमिंग सेशन जब पूरा पेपर रिव्यू होगा, देन वी कैन लुक इनटू एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट? क्योंकि आई फील द डिग्री ऑफ पेपर वाज फेयरली इजी, पूरा स्कोप है। ठीक है, right? So that's it. So you can be positive as long as you have 60 plus scores, but let's see क्या रहता है, because I guess so many students will have around 65 plus, 60 plus तो बहुत सारे बच्चों के होंगे, so it will be a competition. यार नेगेटिव मार्किंग अगेन नैट और एमएसक्यू में कहीं भी नहीं रखते हैं वो। ठीक है, कोशिश वही रहती है कि नैट में भी ना नेगेटिव मार्किंग हो, राइट? सो देयर शुड नॉट बी अ नेगेटिव मार्किंग, राइट? बाकी आप ऑफ कोर्स एक बारी पीवाईक्यू भी देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। वहां पे आपको जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मार्कर एंड 2 मार्कर दोनों ही होते हैं, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.33, 0.67 डिपेंडिंग अपॉन 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट पैटर्न गोज लाइक इट।
So I guess only wanted to inform you कि अब सबकी आंसर की response sheet, question paper, everything is out there on your portal. You guys can go and look at it and yeah, analyze it, arrange it as per the questions. जो question है उसी का answer हो and so on. And of course, अगर आप कल का पेपर नहीं दे रहे हो, you have the entire day to yourself to cross check, correct? And if you are giving tomorrow's exam, तो please a humble request कि ये चीज ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटमेंट रहती है, तो ऑफ कोर्स आप आज ही करोगे, बट मेक श्योर आप ज्यादा टाइम स्पेंड ना करो एंड यू फोकस मोर टुवर्ड्स योर टुमारोज एग्जाम. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन एंड जैसे ही कोई अपडेट आएगा फर्दर विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट बोथ जैम गेट एंड सीयूटी एज वेल. Okay. Thank you so much, guys. Take care.